And we are here Pleased with to meet you all. we are here with Sarsi again. Another session. Yes, another session with Sarsi. So let me just put this in. Sazi and friends. Sarsi, yeah, Sarsi with her friends. Yes. Yeah. So सारसी के साथ हम हाजिर हैं जी और आप अपने सवालात के जो है जवाबात आपको मिल सकते हैं तो सारसी के पास कुछ क्वेश्चन आए थे जिन पे अभी वो शी स्टिल अपनी रिसर्च कर रही हैं और उनके आंसर्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीक Yes. some of the question. Yeah. So there's a question on citizenship. Yes. Now, when in 1941, around that area, Yeah. There's something called the Citizens of United Kingdom and Colonies. Yes. And people were British then. So it wasn't British passport holder like how it is now. Yes. There was a transformation. Yes. Now, the reason I'm very hesitant to give an answer is the question is, can you pass it on? Yes. So if you can pass it on, Yes. then that person can just apply for a British passport, £84, that's it. Okay. If you cannot pass it on and you have to register, that is over £1,000. Okay. So the answer I give has an impact, has a very strong financial impact. Yes. So because of that, I'm very careful to give the answer. Okay. Yeah? But it don't mean I'm not looking. I'm looking for this answer. Okay. Yeah? तो ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था सलमा ने और उनकी सिस्टर्स ने तो आपके लिए ये है कि अभी सारसी जो है शी स्टिल रिसर्चिंग शी स्टिल वर्किंग ऑन इट अस्सलाम वालेकुम रोमा एंड सारसी वालेकुम अस्सलाम Thank you. Yes, before question time comes, there's something on my heart that I want to share with all of you, and that is the refusal letters, the visas that they're being refused right now. Okay. All of them are being refused on financial. Okay. It's always financial. So let me just explain a little bit what you have to provide in your financial evidence, and then we'll go straight to questions. Is that okay? Yes. Yeah, okay. So first of all, there's the question of bank statements. Yeah, we've spoken of that before. Yes. Yeah. Now, when you have the bank statements, there's lots of people, their income, they may put the income in. So the Home Office will be able to see the income. But some of them have money from relatives abroad. Yes. And they don't put that money in. Yes. So they say they have that money, but it only goes in when they're doing the application. Yeah. Then the Home Office asks, where does this money come from? Suddenly it's very money. suspicious. Yes. So when you're making the application and the relatives give you money, you should say 25th June, money from Auntie, Auntie Amina, or this, so that they know that this is where it came from. Okay. And then you should also include the money transfer, money transfer receipt. Data. That same day. So if you say you received it on 25th, 500, then from the UK side, you should have the slip that shows receipt. Yeah? Okay. So सारसी saying जी बेसिकली कि जब आपको जो विजिट वीज़ा है रिफ्यूज़ क्यों होते हैं बिकॉज ऑफ द बैंक स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप लोग प्रोवाइड करते हैं उसकी बेस पर अगर रेगुलर मनी शो हो रही है जिस पर्सन ने आपको स्पॉन्सर किया है विजिट वीज़ा के लिए तो स्पॉन्सर उसने आपको किया है तो वो आपको पैसे जो भिजवा रहे हैं तो वो या कोई जैसे आपके बैंक में कहाँ से भी कोई इनकम आ रही है वो ग्रेजुअली होनी चाहिए इफ़ फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में 20,000 रुपीज़ थे सडनली एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद 2 मिलियन शो हो रहे हैं सो व्हाट विल हैपन वो बोलेंगे कि 2 मिलियन अचानक कहाँ से आ गए हैं अगर ग्रेजुअली पास्ट 6 मंथ का उनको चाहिए होता है आपके बैंक का रिकॉर्ड पास्ट 6 मंथ का अगर पास्ट 6 मंथ में मनी ग्रेजुअली आपके अकाउंट में आ रही है तो आपका विजिट वीज़ा लगने का चांस है अगर सडनली मनी शो होगी वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है Then the next thing is, if you made extra payments, let's say somebody went to hospital. Yeah. So because somebody was in the hospital that time, you spent more money on the person in hospital, but in your application, you say, usually I spend this much. Then you have to explain that extra payment that on that occasion, it was because somebody passed away or somebody went to hospital or there was a wedding or there was a reason
why on that occasion you spent more money than you've written in your application. ओके तो सारसी कह रही हैं फॉर एग्जांपल अगर सो मनी इफ इज द came from someone else in their account. That you should explain. And Yeah. if too much money is going out of your account, you should also explain. तो मनी जो आपके अकाउंट में आ रही है अचानक बड़ी बड़ी अमाउंट वो भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और बिग अमाउंट जो आपके अकाउंट से जा रहे हैं वो भी एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी आपको विद प्रूफ के ये देखें विद बिल्स और कुछ भी आपके पास अवेलेबल है एविडेंस के हाँ भाई वेडिंग थी वेडिंग हॉल बुक करवाया तो ये मनी इसके लिए यूज़ हुई डॉक्टर के पास से ऑपरेशन था या अपॉइंटमेंट थी इसके लिए इतनी मनी यूज़ हुई और अगर मनी आई है और आपके पास किसी ने आपकी हेल्प की है तो आप बताएं कि समवन आई नीडेड दैट मच मनी सो दिस इज माय आंटी और माय अंकल और माय ब्रदर और माय पेरेंट्स दे हैव गिवन मी एज अ गिफ्ट Yes, exactly. तो ये आपको जो है उनको बताना पड़ेगा वी गॉट सो मेनी क्वेश्चंस आरसी सो जस्ट Last two things. Yes. Last two things. Yes. Then you have to show that you can part with the money. If we get this thing right, we will see a lot more visa applications granted. यस तो सारसी कह रही है अगर आपका बैंक स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी एक्यूरेट है प्रॉपर है सही है आपके विजिट वीज़ा के जो है ना जो ये रिफ्यूज़ होता है इसी बेस पर होता है अगर एवरीथिंग इज़ गुड एवरीथिंग इज़ राइट आपके विजिट वीज़ा के लगने के चांसेस पूरे पूरे हैं तो आई थिंक वी हैव एक्सप्लेन्ड रियली वेल हियर Yes. Then another thing is if you say 500, they ask a question. They say, how much money are you personally going to give? Yes. So if you say 500, they will look at your income. And and if you don't show how you can part with that money just for a visit, just for going out, that also leads to refusals. तो वो आपसे ये भी पूछेंगे कि हाउ मच मनी यू गोइंग टू स्पेंड हियर इन दिस कंट्री And explain why you can part with it. और वो पूछेंगे कि आपके पास अगर हैं तो कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आप जो है स्पेंड करेंगे फॉर एग्जांपल यू हैड इट 500 pound in your account and you saying I'm going to spend 500 but after you won't have any left. Yes. You see? Yes. So Yes. so yes, आपको yes. एक्स्ट्रा 500 भी आपके Yes. अकाउंट में होना जरूरी है यू कहाँ से I'm living in Pakistan जो 500 pound but I will spend 500 in when you go abroad as well. Yes. तो आपके पास अगर वो नहीं Yes. है तो इस पे भी Thank आपका you. रिजेक्ट हो Thank you. सकता है Thank you. So this is the thing so I'm just gonna quickly whiz through some Yes. questions. Okay, let's go through some questions. हाँ तो let me go back up there so carer visa UK में कैसे चेंज कर सकते हैं so Shahida asking she's on the carer visa Yes. how can she change her visa to something else so Shahida work visa or can she change into work visa carer visa Yes, you can change. You just have to meet the requirements and get a new COS and then make the application to the home office. तो शाहिदा आपको न्यू COS बनवाना पड़ेगा न्यू रिक्वायरमेंट जो जॉब की है वो आपको देखनी पड़ेंगी तो अगर वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं देन यू कैन आप कर सकते हैं अपना चेंज देन माय नेम इज हिफ्सा काजी आई वांट इमिग्रेशन इन UK अच्छा होले में अली रज़ा अस्सलाम वालेकुम आप किस टॉपिक पर बात कर रही हैं आई एम सुंबल अहमद फ्रॉम सांगला हिल इमिग्रेशन पर अली रज़ा इमिग्रेशन पर हम बात कर रहे हैं सुंबल रिगार्डिंग विजिट वीज़ा वर्क परमिट और स्पाउस फायंसी सेटलमेंट गार्डियनशिप और जो है एनी विजिट वीज़ा स्पॉन्सर अगर कोई होल्ड अ मिनट फॉरएवर लिविंग जी हम फॉरएवर लिविंग नहीं कर रहे वी कांट promote your business here Zoya Zahir sorry सलाम क्या इंसान डिपोर्ट हो चुका हो okay someone is deported Ouch. How did you get yourself deported? and 4 children And the 4 children are in the UK. Here. And does he have a relationship with the children? so वो बच्चों के फादर हैं is he like a relationship like is he the father Yeah. Does he talk to the children? Does he send money from Pakistan? Are the children in his life? तो सैयदा Or is he in the रिजवी children's life? so सैयदा रिजवी जो आपके हस्बैंड आई थिंक यू प्रोबेबली आस्किंग तो आपके जो बच्चे हैं 4 चिल्ड्रन वो आपके साथ यूके में रह रहे हैं और आपके हस्बैंड डिपोर्ट होकर पाकिस्तान चले गए हैं क्या आपके हस्बैंड का बच्चों के साथ कनेक्शन है And कांटेक्ट how long है was the sentence? और कब डिपोर्ट हुए थे sentence. डिसेंटेंट कब थी इनकी ये भी जरा बताइएगा तो दिस इज सैयदा रिजवी इफ यू सो विल नो शी आस्क्ड दैट क्वेश्चन Yes. सो हाउ Said, how long was your sentence? सो हाउ कितनी देर के लिए जो थे क्या किया था डिपोर्ट क्यों हुए थे रीजन क्या थी डिपोर्ट होने की व्हाट वाज द रीजन
No, so deport means you've committed a criminal offense and you Yeah. were deported. Yes. So how long was the sentence? Is it 1 year imprisonment or 2 years imprisonment or 10 जी years और imprisonment? अगर आप अपना प्राइवेट जो है यहाँ शेयर नहीं करना चाहती हैं, यू फील लाइक दिस इज समथिंग यू नीड योर ओन Yeah, प्रिवेसी, yeah, आप yeah, लिबर्टी yeah, सोलिसिटर्स yeah, की वेबसाइट पर yeah. जाएं I think that's the या best. कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करें, कॉन्टैक्ट बॉक्स विल अपीयर और आप अपना नाम लिखें, अपनी क्वेश्चन लिखें। आप उर्दू में भी इनसे क्वेश्चन लिख सकते हैं, वो ट्रांसलेट करके आपको जो है रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो एंड सिद्रा मालिक एंड हाउ टू स्पॉन्सर पेरेंट्स ऑन अ डिपेंडेंट वीज़ा एंड रिक्वायरमेंट्स। तो इफ़ यू गो, अगर आप हमारी लास्ट लाइव चेक करें सिद्रा मलिक, लास्ट लाइव पर वी डिड एक्सप्लेन। Yes, तो yes. ये But that one sees somebody. Let somebody help you. Don't do it by yourself हाँ, ये because it's खुद very, very तो complicated. सिद्रा मलिक आप अगेन आप लिबर्टी सोलिसिटर्स की वेबसाइट पर जाएं, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें, कॉन्टैक्ट बॉक्स विल अपीयर एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, दे विल गाइड यू एंड एडवाइज यू प्रॉपर्ली इंशाल्लाह। हाउ कैन अप्लाई फॉर पेरेंट्स डिपेंडेंट वीज़ा, व्हाट रिक्वायरमेंट, जी मैंने आपको बता दिया है। एंड मेरा नाम जैनब है, यूके में सेट होना चाहती हूँ, फ्रीलांसर सर्टिफिकेट भी है, बस आई डोंट नो बस फ्रीलांसर सर्टिफिकेट, व्हाट डज दैट मीन? Oh, so you're freelancing. You're Yeah. not working for somebody like in a company or Yeah. something. Yeah. Yes. So she said she want to come in the UK and settle down in the UK, and she got freelancer certificate as Okay. well. So yes. So that's again, it's case specific. So Okay. that's again something you'll have to see us. Yeah. हाँ, तो इसके लिए आप ना आपको सारसी से डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको प्रॉपर्ली जो है Because we need to see whatever you're freelancing, the profit it is to the हाँ UK. yeah Whether it's something the UK can benefit from. जी जी। तो अल्लाह की मोहब्बत जो आपने ये क्वेश्चन किया है, तो इंग्लिश, तो शी सेड यूके आने के लिए, so for to come to the UK do you have to know the English? As a visitor, no. हाँ, As anything else, to 99%. so for a visitor आपको कोई जरूरत नहीं है, but for the other things आपको आनी चाहिए। So Sayyida Rizvi, what was the question of Sayyida Rizvi? I need to go back again. Yes, that's the deportation. Yeah, so 10 10-year ban. 10 years. Oof. See us in private. Yeah, so See us in private. Sayyida Rizvi, आप ना लिबर्टी A lot must सोलिसिटर्स have के साथ happened. ये See us in private. ये आप इनसे प्राइवेट कांटेक्ट करें, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि आप अगर शेयर नहीं करना चाह रहे इधर, तो लिबर्टी सोलिसिटर्स का जो है नंबर भी है, आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप इनसे बात कर सकती हैं और ये आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माय ब्रदर इज फ्रॉम पाकिस्तान एंड ही इज करंटली वर्किंग इन ओमान last 5 years, and then he's he's a truck driver, and he got driving license as well in Muscat, and also he had a bank statement as well, you know, which he say Yes, yeah, could he yeah. apply for on work visa to the UK? Yes, he could. अप्लाई कर सकते Yeah, हैं। he could. ये जवेरिया खिरन, so that's And जवेरिया on the खिरन। code, yeah, Javer, on the code, there's a specific code. Huh. It's a 4-digit number. Uh-huh. And with that number, he can apply, because there's one for truck drivers since recently, since Brexit and the shortage, there's one for them. सो जवेरिया किरण, इधर शॉर्टेज हुई है ट्रक ड्राइवर्स की, तो अगर आप लिबर्टी सोलिसिटर से कांटेक्ट करें, दे विल गाइड यू, और अगर आप अपने ब्रदर से कहें कांटेक्ट करें तो उनका काम यहाँ बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बता दें, डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए फर्दर स्टडीज़ और स्कॉलरशिप। दिस इज़ नॉट, आपको इसके लिए व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट वीज़ा? No. It's academic. Yeah, It's academic, not more. It doesn't have anything to do with immigration. ये तो फातिमा, वर्क परमिट वीज़ा के बारे में डिटेल से, वी हैव एक्सप्लेन्ड वर्क परमिट वीज़ा फातिमा प्लेंटी टाइम। अगर आप हमारी लास्ट लाइव चेक करें, अगेन just like a whiz through on work permit visa. Call us. I think it's better. Yeah, just call us and then we will help. What's your qualification? आई डोंट नो फातिमा, आप अपना नाम और अपने क्वालिफिकेशन और सारी इंफॉर्मेशन के साथ लिबर्टी सोलिसिटर्स की वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस में जाके अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, दे विल गेट इन टच विद यू विद इन 48 आवर्स, ठीक है। सो Sayyida Rizvi said she will send you message personally. Fantastic. Yeah, Fantastic. that's It's better fine. for her as well. And then so she said, who's Muhammad Ali Hassan, my sister ka
6.5 और वो MBBS डॉक्टर हैं, तो वो UK में किस तरह? So her sister is MBBS doctor. Yes. How can she apply in the UK to work? Yeah, so that's the same. So there's the procedure is online. हाँ, ऑनलाइन Yeah, प्रोसीजर है. yeah. So that is also something. So she's already qualified. Yes, she's already qualified. That's fine. Yeah. So we can see her through there's a process that's called PLAB, PLAB. PLAB, We can yeah. see her through it, Yes. and then we can assist. Yes. But it will be too much to talk about in a session like this. Yes. So मोहम्मद अली हसन, आप लिबर्टी सोलिसिटर्स को डायरेक्ट मैसेज करें पूरी इंफॉर्मेशन के साथ. आपकी सिस्टर ने प्लैप कर लिया है. आई थिंक देयर इज 2 सेशन यू हैव टू डू प्लैप इन पाकिस्तान और 1 आई एम नॉट श्योर. अगर उन्होंने प्लैप क्लियर कर लिया है देन इट्स शी कैन कम एंड वर्क हियर. ठीक है. ओके. सईदा रिजवी शी सेइंग how we do start business in UK, which requirements required, because my husband is dependent and I am doing a job, so we want to start some business here, but we don't know how to start. Can you help us please? So she's in. in All the of them UK. are in Pakistan. No. So how do we start business in the UK? So आप सईदा रिजवी आप किधर हैं? आप UK में हैं कि आप पाकिस्तान में हैं? आप पहले मुझे ये बताएं. हस्बैंड इज डिपेंडेंट, पर अभी आप कह रहे थे कि आपके हस्बैंड डिपोर्ट हो चुके हैं. द सेम पर्सन सईदा रिजवी. तो आप प्लीज अपना क्वेश्चन है क्लियर करके लिखें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्ड. सो वीज़ा के लिए एज लिमिट, सो फॉर द किसी भी में अप्लाई कर सकते हैं. हस्बैंड वी लिव, सो दे लिव इन सऊदीया. सो आर देयर एनी एज okay. लिमिट्स टू अप्लाई? So the dependents have to be under 18, but the people themselves, no age limit. So dependent They जो just है, have to meet the requirements. हाँ, तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा. ओके. हम कोई बीमार हो और वो अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हों तो उसके लिए वीज़ा मिलता है. अगर someone is ill and they want to get the treatment here in this country, what kind of visa they can apply for? Yeah, so there's a medical visitor, there's that visa. The requirements are very strenuous. Okay. But yeah. हाँ, तो मेडिकल वीज़ा है जी वो, और उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि आप उस रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं कि नहीं. माई सिस्टर UK and citizen and mother UK citizen as well, but my visa was rejected because I'm a single mom and I applied for a visit visa. I don't understand. So she's saying my sister, she's in the UK. Yes. She's a citizen of she's citizen here. Yes. It's mother and sister. Sister. Yes. And then they applied the daughter, which is in Pakistan, on visit visa, and her visa was rejected. Yeah, we would need to see the reasons for refusal. हाँ, तो जी ओप्पो आपको जो है रीज़न जो है रिफ्यूज़ल लेटर के साथ अपना जो है भेजें लिबर्टी सोलिसिटर्स को. they will get back to you inshallah. And that's why I'm telling you, everybody, the financial thing is so important. I Yes. bet you 100 to 1 Yes. is financial something there. ये कोई फाइनेंशियल होगा, कोई मिसहैप हुआ होगा फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट में, आपने मनी जो है बिग अमाउंट शो की होगी, इसी बेस पर वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, और कोई रीज़न जो है इतनी नहीं है उनकी नज़र में. But let me see it anyway. Yeah, so Juveria Kiran asking for truck driver visa, any qualification is required because my brother is no education, and about which code SARS is talking about. If you don't have any education, then I have it. I can tell that you won't meet the requirements. अगर If you education don't have नहीं any है. education at all, because how would you pass the English language test, for example? जी, so जुवेरिया किरण आपका भाई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कैसे पास करेंगे? अगर तुमको इंग्लिश आती है, if he can speak fluent English, he can write, he can understand, Yes. then it's a different thing. But if you have no qualification Education at all, yeah, you won't meet the requirements. एजुकेशन का होना ज़रूरी है. But is he truck driving in Pakistan without any? No, this one is different one. This is you know who said the truck driver okay. from Yeah. Muscat or Yeah, yeah, from there. yeah. So requirement for skilled worker visa and what jobs they can do it. Sidra Malik, आप last में हमारे live check करें, you will get the answer. Thank you, Murshid and Sarsi. Thank you, Sarsi. And I'm Salma's sister. Okay, so the But the skilled worker depends on your own skill. Yes. Yeah. So if you don't have the skill, then no matter what it is, you won't be able to get a job in that area if you don't have the particular skill. So you have to know yourself. Am I
good at cleaning? Am I good at hairdressing? Am I good at what I'm good at? Yeah. And So- that's when you do the visa in that area. So I'm gonna take a break from so I'm gonna take a break from YouTube questions because sorry, I got plenty on yeah. Instagram as well. YouTube. Oh, this. Oh, hold on a second. Sorry, where is it gone? So I'm gonna. तो यूट्यूब इंस्टाग्राम पर जो क्वेश्चन है चेक करते हैं कि कौन से क्वेश्चन है क्योंकि मैम जो हेल्थ का वीज़ा है यूके का उससे के बारे में पूछें हेल्थ केयर वीज़ा वी हैव एक्सप्लेन दिस वन इन एवरी probably in every live So now if you want it, then see us and we will do specific to your situation because we've given the general information. If you really feel that you have those qualifications, then see us and we'll do a tailored application for you to come in. So आप ना लिबर्टी सोलिसिट से डायरेक्ट कांटेक्ट करें अपनी जो है लिखें जो इस तरह के क्वेश्चन है वो आपको बेहतरीन गाइड करेंगे 1-to-1 बिकॉज वी हैव टू गो थ्रू सो मैनी क्वेश्चन और फिर क्या होता है वी मिस like I have missed so many on I have to move the camera a bit this way now guys so I can actually see the question better and you guys can see Sarsi properly as well. so we're gonna go back the questions मैं सारे ऊपर जाती हूँ तो पिंक okay इनका contact number so इनका contact number है 01274 what's your contact number I don't have it with me now. I will do okay I will share the yes I have the detail here तो मैं आपको डिटेल इनकी शेयर कर रही हूँ here we go Liberty Swiss से contact us आप इस पे क्लिक करें I have just shared the link on Instagram तो आप उस पे क्लिक करें please take my question जी अहमद फैज I will take your question just hold on a second okay so we have a question here किधर गया आपका question is there any kind of work visa in which I quit IELTS English language so English language you need for almost all the visas apart from visit visa yes so English language आपको चाहिए सारे वीज़े के लिए except visit visa Fatima मेरी बहन का थोड़ा okay she's like my sister she's got like some psychological like mental health issues the sister is where UK or home Pakistan I think and she's 30 years old can I adopt her so I can look after her no you can't adopt her we can do an adult dependent relative visa the threshold is very high okay so जी अभी उनका बहुत मुश्किल है सिस्टर मेरे हस्बैंड नहीं है मैं बच्चों के लिए इसके लिए आप लिबर्टी सोलिसिटर से डायरेक्ट कांटेक्ट करें एंड दे विल guide you and advise you properly she's saying I'm single parent mother can I in UK or home Pakistan my brother lives in Japan and running his own vehicle business he has MBA degree and also heavy vehicle license in Japan can he immigrate to UK that's very likely very very likely very likely contact us and then we'll give you the so it's called Amma Masood PK Amma Masood Amma Masood बहुत हाई चांसेस हैं इंशाल्लाह ताला अगर आप लिबर्टी सोलिसिटर से डायरेक्ट कांटेक्ट करें अपने भाई से बोलें उनका इंशाल्लाह ताला because he got education qualification and he's got license as well so mashallah and he will have a stable financial bank statement as well तो इनके chances हैं we hope to see him on YouTube saying he's arrived in the UK very soon इंशाल्लाह अगर वो सारसी कह रही है कि लिबर्टी सोलिसिटर से कांटेक्ट करेंगे soon आप भी उनको सारसी के साथ यूके की किसी लाइव में देखेंगे कि वो जी यूके में बैठे हुए हैं तो काम हो सकता है सो सिस्टर हेल्थ के वीज़ा की इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट है फॉर द हेल्थ केयर वीज़ा इंग्लिश मस्ट yes because you are dealing with people तो आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं ना उसका करके इंग्लिश जो है वो मस्ट है सो वन इज क्वेश्चन फॉर अहमद रियाज so English language 2 months 2 modules or 4 work visa so usually in most jobs it's the B1 CEFR
B1 at B1 level for most of them. I think there are some that require higher C or something, but most of them B1 you will be okay. Yeah, so ji, I have shared the link on I think this is my YouTube. मैंने YouTube पर लिंक शेयर किया है सारसी का जो है लिबर्टी सोलिसिटर्स का और मोहम्मद I have missed your question. Oh, how can I apply? He's saying you the Japan one. How can I apply? Yes, so it will be an online application, but it's a complicated process. So it's Yeah. better you see, otherwise we'll take up the whole time and Yeah, it's so gone. मोहम्मद आप अगर सारसी के साथ कांटेक्ट करते हैं ना, she can guide you how to apply or they can do Yes. for most of your We paperwork. can assist, yes. We assist can you. assist with that application. Application होगी तो अगर आप चाहते हैं properly हो and then you can come here, is better to hire a lawyer. You can hire Sarsi as It's well. better, yes. Yeah, तो आपको क्योंकि वो सारा काम आपका डील करेंगे. They know in and out about the home office, you know, कैसे कौन सी requirement है, how to deal with this kind of visas and stuff, क्योंकि उनके पास experience है. तो अगर आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, आई थिंक इट विल बी बेटर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टर प्लीज मुझे भी हेल्प करें जी. टेस्टी कुक बुक आपको क्या हेल्प चाहिए माय सिस्टर? ओके, आपका क्या क्वेश्चन था? इफ आई हैव मिस्ड प्लीज कैन यू आप मुझे दोबारा क्वेश्चन सेंड करें. माय सिस्टर इज इन पाकिस्तान BSc एंड डूइंग गवर्नमेंट टीचिंग and any visa she can apply, guide me. So Miss M Gohar. Yeah, so that's the same. So if she wants Teaching. to come, yeah, look on her qualifications. See, it's a normal skilled worker route. So you know It's a the normal, yeah. can you Sarsi, can you share the website with me so I can have we done that before, haven't we? Yes. We've done that before. I didn't bring it with me today, Yeah, so so- I'll have to give it to you afterwards. Yeah, but if you go back आप जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त, अगर आप वो जाए ना हमारी लाइव्स में, just don't watch the live if you don't want to, but go check in the description box. आपको ना वहाँ information मिलेगी either on the YouTube or on Instagram. Please, my answer जी. Miss Safia, आपका क्या question था? Sorry. Safia. So her question is, hello जी, I am इकरा नुमान. मी UK आने के लिए कैसे अप्लाई करूं? मिस सफिया, पहले आप बताएं कि आपने किस बेस पे UK आना है. How you want to come to UK, on visit visa, on settlement visa, or work visa, और कौन सा है? Because The question is too general. yeah, कि UK आना चाहती हूँ so okay. Freelancer की बैंक बैलेंस कितना जरूरी है? How much freelancer they have to show their bank balance? How much they should have? Freelancer No, it's not a matter of a specific bank balance. कोई नहीं, बस जितना है आप उतना शो कर दें, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. सो आई हैव TRC इन Portugal. Can I visit UK? I want to come to visit for 2 weeks. I have TRC, so it's called TRC card in Portugal. How much fee you charge for visa application? We charge 650 for visa application. Visa application Ash is £650. 650 जो है For everything. everything, सारा from paperwork to सारा कुछ जो है Statements, Statement. personal statements, your family, everything. everything The इतना online है. application, the appointments, the finger, everything. सब कुछ included है. Sister, I'm single mother. मैं अपने बेटों को What's her UK name? her name is Tasty Cookbook. Oh, okay, tasty cookbook. So she's a single mother. She wants Yes. to get her boys here and want them to settle down here. It's very question का इसका जवाब हम क्या दें आपको? Study visa fee. Okay, study visa fee. How much the study visa fee is? So is he studying privately? Where are they studying? Is it all the children? What are the requirements? Sister. And it also depends on whether they're in the UK or whether they're in London or they're outside London. जी स्टडी वीजा फी डिपेंडिंग टू आप कौन से शहर में है, हर तरफ डिफरेंट है. Yes. कोई एक नहीं है. तो सिस्टर शेफ का वीजा कैसे अप्लाई करना? हाउ कैन आई अप्लाई फॉर द शेफ वीजा? Oh, yeah, that's another good one. That's another good one. Yeah. So that's another skill worker. But you have to find somebody who's going to employ you as a chef. पहले आप यूके में अपनी सर्च करें, यहाँ रेस्टोरेंट से कांटेक्ट करें. अगर वो आप बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, यू नो व्हाट काइंड ऑफ शेफ यू आर. अगर Yes. आपको जॉब ऑफर करते हैं, देन यू कैन गेट इन टच विद लिबर्टी सोलिसिटर्स. दे विल हेल्प यू आउट इंशाल्लाह.
आप ही मेरे पास 5 years का रेजिडेंस कार्ड है, मैं 2 years से नहीं आ सकी, क्या अब मैं so she said she got 5 years of resident card residence Yes. card, yeah, Yeah. and then for past 2 year she Yes. didn't come back to the UK. Ooh, it might have lapsed. Can she come back? It might have lapsed. If I mean, you can come and stand at the airport and see if they let you in or not. It depends on how much, but I think over 2 years it might well have lapsed. Yeah. Now, sometimes if you meet a good person at the airport, they will let you come in and come and sort it out. Okay. Other people will send you back. Oh. Yeah, it's 2 years. I think it's lapsed. So 2 years जी आपने तो बड़ा टाइम ज़ाया कर दिया. आप किधर थे 2 years के लिए? अगर आप 6 month after 6 month you could have come and then बेहतर होना था आपके लिए. स्टडी वीज़ा फ़ी की स्टेटमेंट कैसे बनाएगी? गुज्जर आप प्लीज़ इनको मैसेज करें सेपरेटली. आप क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं. डोंट रिपीट द क्वेश्चन टू मैनी टाइम. इस तरह पर जो दूसरे मैसेजेस हैं वो ऊपर चले जाते हैं. I have shared the detail. Contact us. आप इनसे contact करें. Yeah, we'll respond to your email, to your inquiry. Yeah. There are some very important question. Yeah, जो okay. हाँ जो लोगों को information चाहिए है. What's happening when you keep repeating the same question? I'm losing the important questions. कुरत हाशिम सारसी बोल रही हैं. आप एयरपोर्ट पे जाके देखिए समटाइम क्या होता है, आपको वो जानने देते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप जो है इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, वो फिर आपको जो है आपकी हेल्प करेंगे. तो शी सेइंग मेरा सवाल कि हमारे पास सेटल स्टेटमेंट के यूके के 318 वो अच्छा. सो शी सेइंग माय क्वेश्चन इज दिस to UK to settle down in the UK. I have 3 children under 18 years old. How can they apply for British passport and then they go Italian nationality for life? Yeah, but if you have Italian nationality, it doesn't let you automatically get British passport. Is the person in the UK? What's the basis on which you want the Also, British? do they have to apply life in the UK test? They are under 18. Who? No, no. नहीं जी, अंडर 18 को लाइफ इन द यूके के लिए नहीं करना पड़ेगा. ठीक है. सो दिस वाज एडेनमीर. नहीं, उनको लाइफ इन द यूके जो है नहीं अप्लाई करना पड़ेगा. दे 18, they in the Italy and they want to come to the UK. Do they have to do life in the UK? No, they don't. No, they don't. But Italian people don't have right to British passport. So I'm wondering, on what basis? Just because you're in Italy doesn't mean you can get British passport. So is there something else? मेरा सवाल ये है कि हमारे पास settle statement है. They have settled status. Yeah. They have settled status. Yes. Yeah. Mm-hmm. So they don't need and they can do it. Yeah. हाँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है. आप फाइन है. You safe. ईमेल शेयर करें प्लीज़. ओके, आई विल शेयर दैट अगेन. आई हैव डन कपल ऑफ टाइम बिफोर बट आई विल डू दैट अगेन फॉर यू गाइस. मैंने जी शेयर कर दी है. एंड देन माय लास्ट मंथ इंडेफिनेट स्टे मिलनी थी. सो लास्ट मंथ शी वाज गोइंग टू गेट इंडेफिनेट स्टे. Yes. बट देन दे पुट हर अगेन फॉर 10 years. Yeah, I would need to know why. There must be a reason. So, सकीना, आप प्लीज़ लिबर्टी सोलिसिटर्स का जो मैंने लिंक शेयर किया है, पूरी इंफॉर्मेशन, फुल इंफॉर्मेशन के साथ आप इनको अपना क्वेश्चन लिखें एंड दे विल गाइड यू. ठीक है, क्योंकि इस तरह हम जब रीज़न क्या थी, क्यों उन्होंने किया, ये भी जानना ज़रूरी है. अगेन जी मैंने नंबर शेयर कर दिया है. आई एम ए सिंगल मदर. मेरा बेटा सन डन MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट. And then he want to do PLAP, but he is reluctant because because he can't keep mother because the UK government, parents, family, they don't consider. So he done the son done MBBS. Yeah. He doesn't want to do PLAP now. Yeah. Because if he does PLAP and apply here to the UK comes. Yeah. He can't bring his mum with him because the UK is very strict. Yeah, what can we do? What can we do? This is sad reality. It's sad reality, yes. तो जी हम कुछ नहीं कर सकते. UK
कि विजिट वीज़ा पे आप वो अप्लाई कर सकता है, बिकॉज फिर आपके They पास don't understand the concept here. हाँ That यहाँ ना they नहीं वो don't अंडरस्टैंड understand. करते, मुश्किल हो जाएगा, Sadly, ये that's नहीं हो सकता। तो प्लैप वो करवाएं, आपका बेटा यहाँ आके करे, अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, वो आपको विजिट वीज़े पे बुला सकता है, बिकॉज यू विल हैव द रीज़न टू गो बैक होम। ज़ाहिर है आपके शोहर होंगे या आपके दूसरे बच्चे होंगे जो आपको उनके पास वापस जाना है, तो आई थिंक आप ऐसे कर सकते हैं। आई इफ़ आई गॉट वर्क वीज़ा फ्रॉम अ कंपनी एंड रीच्ड UK आफ्टर 1.5 year, if the company is closed, what is the next step? yeah. So you have to fulfill the requirements for another company. तो Once you दूसरी कंपनी yeah, में आपको जी करना then पड़ेगा। you reapply to the home office, and then that should be fine. ऐसे से आपके अब्बू वाले केस है, मेरी अम्मी का भी प्लीज बताएं, अब्बू जी का कब वीजा लगा? जी अब्बू, दैट्स माय फादर्स वीजा, इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट मंथ Oh, या सम yes, yeah, टाइम yeah, yes, कोई yes, खैर की yes, खबर आएगी yes, yes. इंशाल्लाह। सो माय डॉटर हैव, वेयर इज क्वेश्चन गोन, माय डॉटर हैव 5 year वीजा इन वर्किंग इन Amazon's in London, Amazon. Yes. If their job, if her job finishes, how much time they have to stay there till they find new job? You should never be without a visa. So before that time, you should do it within the currency of the visa. तो विजिट वीजा, वर्क वीजा एक्सपायर होने से पहले ही जॉब वो ढूंढ के रखें, ताकि वो अगर एक्सपायर हो जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। हाउ कैन कम UK फ्रॉम ऑन वर्किंग वीजा विद फैमिली? आप लाइव चेक करें, हमारी पिछली लाइव में हमने एक्सप्लेन किया था। मैं मम एंड डैड पास्ड अवे, just unmarried sister who is in Pakistan, and I want to apply for her. So parents passed away. She's only got one sister is in Pakistan. Can she apply for her? It would be difficult. Difficult It होगा। would be देखिए आपको difficult. आपको हम प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। We You don't can want to always misguide make any you. application, but whether you will get it, that's another question. So Adamir पूछ रही हैं, if the parents have British nationality and then the children are still under 18. Okay. अगर पेरेंट्स के पास ब्रिटिश नेशनैलिटी ना हो, तब भी अंडर 18 बच्चे नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेटल स्टेटमेंट के साथ। सो दे हैव अ सेटल स्टेटमेंट बट द पेरेंट्स डोंट हैव ब्रिटिश नेशनैलिटी। कैन द चिल्ड्रन अप्लाई हु आर अंडर 18 फॉर ब्रिटिश नेशनैलिटी? Where are the children? In Italy. If they come here, If they came here. yeah. So I have to check on that one. I'm not sure. Because if they were in the UK, I know they could. But outside the UK, I'm not sure is the अच्छा, answer. आप I'll पहले have to check. I don't know. आप मुझे ये बताएं आमिर के आपके जो हैं वो यूके में है कि अभी आप इटली में ही हैं? आप इस वक्त किधर हैं? आप मुझे पहले ये क्वेश्चन जो है क्लियर करें। कैन वर्क वीज़ा का भी थोड़ा सा, वर्क वीज़ा जी, वर्क वीज़ा आई विल टेल यू वर्क वीज़ा इन अ बिट, बट आई हैव टू गो बैक टू सम अदर क्वेश्चंस। मेरे पास स्वीडन पासपोर्ट है, क्या मैं अपनी अम्मी के लिए स्टेट सेटलमेंट का अप्लाई कर सकती हूँ? सो शी का स्वीडन पासपोर्ट, Yes. कैन शी अप्लाई फॉर हर मदर्स लाइक अ सेटलमेंट वीज़ा? She can apply for her mother to come here, but she has to show that mother is dependent on her. So she would have to show some form of dependency. आपको ये दिखाना पड़ेगा शिकवा सीम के आपकी मामा के पास बैंक स्टेटमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे नहीं कर रही, बोझ नहीं है, और वो अपना खुद बोझ उठा रही हैं। The dependency should have been by 31st of December 2020, but I think we could still do it. हाँ, तो 31 दिसंबर 2020 तक अगर कोई प्रोवाइड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स जहाँ ये शो हो कि वो अपना खुद उठा रही थी। हेलो, आई हैव ब्रिटिश पासपोर्ट, बोर्न इन हांगकॉन्ग, गॉट ब्रिटिश नेशनैलिटी अंडर 1981 एक्ट ACT बाय registration, family and I am in Hong Kong, how can I apply? They have Pakistani passport. This is one of the ones I'd have to look into. हाँ, तो अगर आप मोहम्मद, अगर These आप ones are difficult because they're not common. तो आप सारसी से कांटेक्ट करें, तो पूरा जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, तो इंशाल्लाह ताला सारसी जो है आपकी हेल्प आउट करेंगे।
So the next question is Salam कैसी हैं? वालेकुम सलाम. मैं इटली में हूँ. So I'm in the Italy for past 2 years. Yes. And then I have all the documents. With what visa? What passport? आप इटली में किस बेस पर हैं? शाइली, आप पहले मुझे ये बताएं कि आप इटली में किस पे हैं? अभी इधर पासपोर्ट मेरी I'm been here, so Shazia Ibrahim, I'm here for 20 in here In UK? 20 years. Yes. And then I haven't got no 65 age now. Yes. Yeah. Please contact us. This is a good one. This, हाँ तो please, शाजिया please, मेरी please. 20 साल से इधर हूँ. अभी इधर का पासपोर्ट नहीं मिला. एज 65 साल है आंटी की. शाजिया इब्राहिम, आपको पता है कि आपकी आंटी को पासपोर्ट मिल सकता है ब्रिटिश? तो आप इतनी देर से किधर थी? इतना टाइम क्यों ज़ाया किया आप लोगों ने? You guys wasting so much time. Been here for 20 years and she's 65. She could have the passport ages Yes. ago. Yeah. तो उनको मिल सकता था. आप सारसी से कांटेक्ट करें, लिबर्टी सोलिसिटर से फौरन, और इंशाल्लाह ताला आपकी अगले कुछ महीनों में आपकी आंटी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट होगा. Yeah, ठीक है? this is a good one. Please contact us or contact other बिल्कुल. lawyers. You can get this one. So we have, मैंने जो क्वेश्चन आप सब सुन रहे होंगे, some questions, Sash is very straightforward. I'm telling you guys now. She will tell you, आप लोगों को बताएंगी where she can help and where she can't help. And she won't misguide you. वो आपको ये नहीं कहेंगी just oh I'm gonna get the money, I'm gonna say yes to everything. नहीं. This is the good thing about Sash. She only say yes if there's chances. Otherwise she will say there's no, we can't. तो आपको ये रहमा जी आपके अब्बू आ रहे हैं आपके पास जी. इंशाल्लाह बस दुआ करें, अल्लाह खैर करे. Recently my husband got indefinite. I have to remain. Indefinite have to remain. Yes. When can I apply for a British passport? तो indefinite remain जी 2.5 year का था और 5 year का था और 10 year route था. What was the route? They have to explain first. Yes, if it's a spouse visa, then immediately they can do their British passport. If it's not a spouse visa, then they have to wait for a year. अगर तो spouse visa था आप फौरन apply कर सकते हैं. अगर नहीं, then you have to wait for 1 year. Yeah, and then hello, I have British passport born. Okay, let me just go back to these questions. Hold on a second. So I have missed some. Can I? So where is gone? Go back where the question was. Yes. So Shazia Ibrahim, contact Liberty Solicitors, please. Salam कैसी है? वालेकुम अस्सलाम जी, हम ठीक है. So I'm Italy में for past 2 years. I'm in the Italy. Yes. I have all the documents. Yes. And I want to come to the UK. But आप शाइली, आपके पास किस चीज की बेस पर आप इटली आई हैं? Work permit? Yeah. What documents are you saying you have? Yeah, she's saying love you Sarsi. Love you too. Love you too. Love you too, love you too. So if I have got work visa from a company and reach UK after 1.5 जी, आपको उस कंपनी से दोबारा कांटेक्ट किया, उस तरह की कंपनी से दोबारा कांटेक्ट करना पड़ेगा. How much time I have applying in other company? How much time I have to apply for the other company? Yeah, just make sure you're not an overstayer in that company. You have to make sure that before that visa runs out, you've submitted that application. Because once you become an overstayer, you won't get it. हाँ जी, तो You'd have to leave the UK and come back. जी, तो ऐसे करना है. So next question is मुझे किसी ने बोला था कि वो अगर someone said if you one of your parent have a British passport, Yes. then you can get the nationality after age of 18 years. Is that correct? If one of the parent have a British passport, the child, if he's under 18. No, so if the child is under 18, yes. If the child is over 18, then the child would have to qualify in the child's own right because the child is an adult now. हाँ जी, under 18 मिल जाएगी. अगर over है तो फिर आपको दूसरे जो है routes explore करने पड़ेंगे. So under 18, yes. So how much I have? Okay, I have a repeat. और क्वेश्चन जी, केयर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं जी? Yes, you can apply for care visa. My sister is in the UK. Can she apply for me? What base? On which base, isn't it? Yeah, so just to apply for her to come to UK. Yeah, we would need a basis. Or is it the carer basis? Yeah. So she want to apply for sister visit visa के लिए. Any entry into the UK, we need a basis. Any entry. Care visa के लिए genuine way आप बताएं जी. Care visa के लिए genuine way आपको. Okay, what I will do after the live, I will take the link which Sarsi had shared in the previous
lives. Yes. I will share that link again जहां आप जाके apply कर सकते हैं for care visa. And then next week we can do a carer visa session as well. Care visa requirement, care visa requirement, care visa requirement. So everybody, next week we're doing a carer visa session. Yes, care visa तो आपको जो है आप केयर वीजा पे आपको जवाब मिलेंगे नेक्स्ट वीक केयर वीजा के मुतालिक होगा कि because it looks like it's a favorite topic. It is indeed. How you any work how have you any work sponsor? Have you any work sponsor? Aisha Malik, I don't understand your question, sorry. Mrs. Ghaur, केयर वीजा के लिए जी केयर वीजा के लिए आशा मलिक आपको नेक्स्ट वीक पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. So UK lifestyle, my sister live in Pakistan, she is mentally ill, how can I bring her here in the UK? So it would be adult dependent relative, but that threshold is very high, very high. बहुत हाई है तो उनका वीजा लगना बहुत मुश्किल है. So it's very difficult to get her here. Yeah, if she's your sister and you really want to, we can have the fight. I like the challenge. I would accept the challenge and do everything I could, but you just need to know that it's an uphill battle. Okay. It doesn't mean no, it won't succeed. What is it? So Muhammad, we write this name down. Muhammad 7233 Ali. I have messaged Sarsi twice last month on Liberty Solicitors, but no reply. What was it about? Muhammad, ये किस था क्या question था? Please अगर आप अपना question मेरे से share करें, so we will know then. Yes. So the next question is Zafar Bari. So अगर मैं के पास अगर मेरी भाई के पास, I think you said भाई के पास, if my brother have a UK nationality and he is 75 years or above. Yes. So can he get her daughter who's 50 years old and 25 years old and then 2 grandchildren in the UK? So when did he get the nationality? So he is 75 years old. Were the children born after he got nationality or before? तो जफर बारी आप पहले मुझे ये बताएं कि उनको नेशनैलिटी कब मिली थी. जब उनके बच्चे मतलब के पैदा होने के बाद या बच्चों के पैदा होने से पहले उनके पास नेशनैलिटी थी. दिस इज अ गुड वन आई थिंक. Yes, if he was a national and then the children were born, then the children are British. Even if they're born in Pakistan, it doesn't matter. What about the grandchildren? Then they can't come here, can they? No, but because they're 50. If they were under 18, they could have registered. So grandchildren की एज क्या है? आप ये भी जरा मेंशन करें. जफर बारी, I will say to you, मैं आपसे ये कहूँगी कि आप लिबर्टी सोलिसिटर से डायरेक्ट कांटेक्ट करें पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ. आई थिंक दिस इज आपका मुझे ये अच्छा गुड लग रहा है ये वाला जो आपका केस है, तो वो आपको बेहतरीन गाइड करेंगे. और मे बी यू नेवर नो. And there's something called the ancestry visa. Yeah? So I'll check the requirements, but I don't know them off the top of my head. I will have to check the requirements and see if there can be an avenue under the ancestry visa. Okay. But I'm not sure of that. I would have to check. Okay, so Muhammad Ali, he said Hong Kong nationality have British nationality under 1981 ACT so he questioned. Yeah, so those are the questions that I've said. They're difficult ones for me. I'm still looking into that. हाँ जी, तो मोहम्मद सारसी आपको इसलिए नहीं जवाब दे पा रही कि ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट थे. I would rather not give you advice than give you the wrong advice. So my apologies, please. तो वो आपको पूरी सर्च करके आपको इनके जवाब देंगी कि वो जब खुद satisfied हो जाएंगी, then she can satisfy you as well, because if she don't want to misguide you. Yes, but once I know the advice, you will see me talking like no man's business on it. Don't worry. तो सारसी जैसे ही काम इंफॉर्मेशन लेंगी, she will get back to you. ठीक है. और जफर बारी, आप प्लीज कांटेक्ट करें लिबर्टी सोलिसिटर्स की वेबसाइट जो मैंने शेयर की है अपने यूट्यूब पर, आपको वहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगी. Thanks, sister. Ji, welcome. Aisha Malik Singh, thank you as well. Okay, so there are lots of thank yous coming as well. Thank you. So Aisha Malik Singh, मेरी अम्मी पाकिस्तान में अकेली हैं, क्या मैं अपनी अम्मी को यहाँ ला सकती हूँ? मैं स्पाउस वीजा पर हूँ और मुझे 3 साल हुए हैं इसका. Okay, so she's saying she's on spouse visa here. Yes. Aisha Malik, her mother, she's by herself, lives in Pakistan. Can she get her mother here? On a visit. विजिट वीजा पर या सेटलमेंट वीजा पर आयशा. और मेरे हस्बैंड इज ब्रिटिश नेशनल. आयशा हस्बैंड का ब्रिटिश नेशनलिटी. सारसी अंडरस्टैंड उर्दू लैंग्वेज? I'm learning.
ਸਾਰਸੀ ਕੋ ਜੀ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਸਾਰਸੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਜਾਏਗੀ इंशाल्लाह ਸਾਰਸੀ सीख जाएगी सारसी विल बी स्पीकिंग उर्दू विद यू गाइस एज वेल सो आयशा मलिक एक और क्वेश्चन है मेरा प्लीज क्या आप इनसे पूछेंगी प्लीज रमा जी 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 आयशा मलिक व्हाट्स योर क्वेश्चन सिस्टर शेफ के लिए पाकिस्तान से कैसे वीजा अप्लाई करेंगे टेस्टी कुक बुक आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो soon the live finish I will take the link from Sarsi I will share with you guys मेरे पास indefinite है क्या मैं अपने parents को I got so she is Fatima saying I got indefinite can I get my parents here again on visit visa Yes. हमें Yeah. और उसका और what is the procedure बेहतर यही है कि अगर आप लिबर्टी सोलिसिटर से डायरेक्ट कांटेक्ट करें ये जो क्वेश्चंस है ना ये डायरेक्ट कांटेक्ट करें सारसी जो है आपको वहाँ जवाब देंगी क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है और मेरी सिस्टर स्टडी सो अदर क्वेश्चन इज I have a sister she came on the study visa UK 4 months she paid and then let me just read this one in Urdu first make me understand बाजी मेरी सिस्टर के स्टडी वीज़ा लगा है यूके के 4 मंथ की पे दी है 4 मंथ बाद फर्स्ट मंथ दे सकते हैं और साथ जॉब कर सकती है ओके सो सिस्टर केम हियर Yes. फॉर स्टडी वीज़ा शी पेड 4 month fee Yes. yeah and then now after 4 month she pay like a monthly but that's obviously this you Yes. find from the university if they That's from the uni. You should do everything so that the uni Yeah. or the college doesn't tell the home office Yeah. that you can't pay your fees. Yeah. Now, immediately the home office, the university institution tells the home office that the home office will curtail your visa. Yes, and she's saying, can she work as well? On your study visa, it will tell you if Yes. she can work or not. Yes. आप अपनी बहन से पूछे उसके study visa पे अगर तो है option she can work then she can. If she can't, she have to be very careful. Yeah, so it's usually either 10 hours or 20 hours during term time. Yes. And then on holiday as much as you want. Depending on the institution, Acha. either 10 or 20. Ani Khan, my question is long, please. अगर read कर लें तो पूछ लो जी पूछें. What was your question? I can try my best to read. Please आप इनसे पूछ सकती हैं. Please can you ask her that my brother Pakistan and he is on वो wheelchair पर है. He's on the wheelchair. When and वहाँ पर उसको देख she have no one there to look after him. And parents have passed away. Parents की डेथ हो चुकी है. Can they get him here? Yeah, it's not impossible, but it's difficult, very, very difficult. But again, when I see your circumstances, when you tell me this is what I'm doing, then I would know, okay, we can use this, we can get this, we can do this, and we can try. Yeah, तो better यही है कि आप लिबर्टी सोलिसिटर से डायरेक्ट कांटेक्ट करें and Sarsi will read through your message and then she can guide you and advise you properly. So the next question is, sister, I live in Spain. Yes. And then मेरी UK settlement हो सकती है. Spouse visa है मेरा. She's in spouse visa. She's in Spain. Yes. Can she get the settlement in UK? Easy. Easy. There we go. You got it, girl. You got it. Easy मिल सकता है. अक्सा उमर. She's in Spain on spouse visa. So she, her husband, and she can get the UK visa. Yes, जी आप no problem at all. Yeah. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अक्सा आप कांटेक्ट करें लिबर्टी सोलिसिटर्स के साथ. They will help you out We'll inshallah. get you here. Yeah. Yeah, वो Yes. सारसी कहती मैं तो आपको इधर लेकर आऊंगी. I am living in Huddersfield. जी तो आगे Huddersfield. Okay, thanks sister जी. You welcome. You're okay, welcome. तो मैं बाकी क्वेश्चन पढ़ती हूँ. बाकी ये है शबाना. So the next question is, I have a European nationality. Yes. And pre-settled Pre-settled status. Yes. Can I apply for British nationality? And do I have to do the life in the UK test if I have to? So if you've got pre-settled status, then you can't apply for nationality yet. Yeah. You need settled status first. Okay. When you do get settled status, Yeah. then you will have to do. Life in the UK. Yes. So if you don't have the pre-settled status, if you don't have Pre-settled status, you can't do. You have to get settled status. Okay. Before you can do the nationality. So it's pre-settled status, settled settled status, nationality. Okay. And at that stage,
UK life in the UK test. ओके जी, ये आपको देना पड़ेगा लाइफ इन द यूके टेस्ट समीना आसिफ, पर आपका प्री सेटल्ड स्टेटस है, देन इट विल बी सेटल्ड स्टेटस, देन इट विल बी नेशनैलिटी. सो प्लीज आंसर मी. जी समीना आसिफ, हैव मिस्ड योर क्वेश्चन. अगर मिस हो गया हो तो आई एम सो सॉरी. सो विच इंग्लिश टेस्ट फॉर वर्क वीजा कुड यू मेंशन द नेम प्लीज? Yes. Okay. So it's for most of them. For most of them, it's CEFR at level B1. For most of them. Yeah, so CEFR level B B1. test, B1 test. Yes. Some ask for C and higher in specific, but for most of them, with B1 you should be okay. Yes. Okay. फातिमा, मेरे पास indefinite है, क्या मैं अपने पेरेंट्स को बुला सकती हूँ? क्या तरीका है? So she got indefinite. She want to get her parents here. जी फातिमा, on what kind of visa? पहले आप ये explain करें. सिस्टर सारसी सिस्टर को कहे कि आप सबकी मुश्किल हल करती हैं, मेरे चैनल के लिए दुआ करें. She said you have so much. Tell people to make a pray for my channel to grow. ओके जी, ओके इंशाल्लाह. ओके हमने जी, अब मैं लास्ट क्वेश्चन है पढ़ूंगी इधर, तो क्योंकि वी हैव टू टेक अ लीव एज वेल. सो माय ब्रदर इज ब्रिटिश सिटीजन. ही गेव डिवोर्स टू यूके वाइफ, but he is having a family in Pakistan. He gave divorced this year UK wife, but kids are 5 years old in Pakistan. Yeah, we should be able to help with that. Get in touch with us. I need to know the circumstances. अनीका, आप अपने भाई से कहें कि But it सारसी के sounds साथ good. साउंड गुड है. जहाँ सारसी के साउंड गुड है, ਇਹਦਾ मतलब ताड़ा कम हो गया. तो आप उनसे कहें कांटेक्ट करें. You know, सारसी will help you. Some people say they'll contact us, but they don't. Yeah. तो आपसे जब कांटेक्ट के लिए कहते हैं तो कांटेक्ट किया करें, क्योंकि आपकी बेहतरी के लिए कहते हैं, इसमें आपका फ़ायदा है. अल्लाह आपको जज़ा दे इंशाल्लाह. थैंक यू. एंड देन और सारसी, she said may Allah Ta'ala reward you because you're helping people out. May Allah Ta'ala give you immense reward. Thank you. Thank you. If we want to family visa with 2 kids under 10 years, what can we do? What do you mean family visa? The family wants to come on a visit, or the family wants to come and settle, or the family wants to come and join other family? Yes, so home आप question करें. Can we bring wife and kids to UK? Can he brings wife and kids to the UK? And what does the person, is the person British? If the person is British, yes. Yeah, the same one. You know, he said brother is British citizen. You know, who gave divorce to his wife, and then now he's having children in Pakistan. Yeah. Yes. लेके आ सकता है. Yes, family. Please. Yes. Yeah. So if we want to family, kids under all the children under 10 years. If you married and you were not divorced and you were still married here, then the wife will have a problem, but the kids won't. But if you divorce finish. Yeah. And then you married. Yeah. No problem. No problem जी, no problem. आप अपने भाई से बोले कांटेक्ट करें. वो अपनी वाइफ को एंड बच्चों को यूके लेके आ सकते हैं. कॉन्टैक्ट लिबर्टी सोलिसिटर्स, आई हैव शेयर द लिंक, एंड देन आप इनसे बात करें, आपकी हेल्प हो जाएगी. मैं यूके जी आना चाहती हूँ अभी. आई एम गोना टेक अ लीव बिकॉज देयर सम क्वेश्चन व्हिच आई कांट. ब्यूटीफुल सारसी सिस्टर, लव यू सो मच. I love you too. Love you too जी, love you too. Okay जी, अब हम इजाज़त चाहेंगे. We're gonna take a leave because it's gone over time today. Yes. So we will meet you again next week. I'll share the time. Okay, I got a question. Great. Yes. I'm gonna just need the last question, Sarsi. Yeah. Okay. It seems a good one. Let's have it. Yeah. So my parents are 75 years, above 75 years age. They got UK nationality. They got UK nationality. Yeah. And then their niece, she's a widow, 50 years of age. And then can she apply for the care visa to look after them? Again, it would be difficult because the UK will say social services and other things. They can go into an old people's home. But if we can show that there's a reason why specifically we need this niece, then it will. जी, तो हमें ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि यूके में ज़ाहिर फैसिलिटीज़ हैं, केयर होम है, सोशल केयर है, नर्सेज घर आ सकती हैं. तो अगर उनको की जाए कि नहीं, हमें ये नीस ही चाहिए बिकॉज शी गॉट अ गुड कनेक्शन विद द पेरेंट्स और समथिंग टुवर्ड्स के हम अपनी फैमिली का ही बंदा चाहते हैं बिकॉज सम योर रिलीजन
have a big impact on Or this they as have a well. particular condition, which Condition. only the niece understands, like dementia. Like in your Dementia, case. yes. It depends. We would have to know more. Yes, so are we will answer, we will gonna take a leave now. So ji, thank you so much everyone, Thank you, everybody. and we will see you next week, same time and same day, hopefully, inshallah. Yes, Hope you and we're guys doing Cara Visa next week, guys. care visa, care Yes, visa. it looks like lots of people want that. Yes, definitely. तो जी दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे आपको again. जज़ाकल्लाह खैर. Assalamu alaikum Assalamu alaikum. everyone. Assalamu alaikum. So